Hello children, this is our English class. Let's read this poem Who Likes the Rain, written by Clara Doty. So children, follow your book. Follow your book and read the poem along with me. Who likes the rain? Who likes the rain? I, said the dog. I call it fun, for I have my red rubbers on. They make a little tree-toed track in the soft, cool mud. Quack, quack. I, cried the dandelion. My roots are thirsty, my birds are dry. And she lifted a tousled yellow head out of a green and grassy bed. I hope it'll pour, I hope it'll pour, purred the tree toad at the grey bark door. For with a broad leaf for a roof, I am perfectly waterproof. Next page. Sang the brook, I laugh at every drop and wish they never need to stop, till a big, big river I grew to be and could find my way to the sea. I shouted dead, for I can run with my high top boots and raincoat on through every puddle and runlet and pool I find on the road to school. Read again, children. Who likes the rain? I, said the dog. I call it fun, for I have my red rubbers on. They make a little tree-toed track in the soft, cool mud. Quack, quack. I, cried the dandelion. My roots are thirsty, my birds are dry. And she lifted a tousled yellow head out of her green and grassy bed. I hope it'll pour, I hope it'll pour, but the tree toad at the grey bark door. For with a broad leaf for a roof, I am perfectly waterproof. Sang the brook, I laugh at every drop and wish they never need to stop, till a big, big river I grew to be and could find my way to the sea. I shouted dead, for I can run with my high top boots and raincoat on through every puddle and runlet and pool I find on the road to school. So this is very good poem written by Clara Doty. Now children, in this poem children, we can see the poet is asking that who likes the rain? At first the duck called it fun as it had its red rubbers on and make make tree-toed track on soft mud. You know, a duck has red feet with tree-toed, and when it rains, the mud gets soft, and a duck makes three-toed track on this soft mud. Then we can see Dandelion said that it liked the rain. The rain is very good for its thirsty roots and dry birds. You know, dandelion is a kind of small yellow flower.
Then the tree toad. Tree toad is one kind of toad that lives in tree. It's small green toad. It said that it wished rain would pour and pour. The tree toad made itself waterproof with the help of a broad leaf. Then you can see, then it was time for brook. Brook means a small stream. So Brook said, Brook said it wished rain would never stop as it wanted to be a big river and find its way to the sea. And at the end, we can see Ted, who might be a small child, said that he also liked rain very much because in the rain he could run wearing his high top boots and raincoat through every puddle on the way to school. So, this is very good poem. इस पोएम में क्या बताया जा रहे हैं, एक बार आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए. इस पोएम में जब पूछे जा रहे हैं कि रेन किसको पसंद है, तो सबसे पहले डक ने बोला कि रेन उसको बहुत ही रेन पसंद है, ये फन है. और क्योंकि रेन में डक अपने रेड रबर्स पहने हुए होते. डक का फीट क्या होता है, डक का फीट आप लोगों ने देखे हैं, 3 टोड होते हैं. तो उसमें तो इसलिए क्या डक बोल रहे हैं कि मेरे तो रबर्स के ये 3 टोड पैर है, तो इससे क्या होता है, मड में उसका ऐसे 3 टोड का ट्रैक हो जाता है. ओके. फिर डैंडलियन ने बोला कि ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसके रूट्स जो है वो थर्स्टी होते हैं, बर्ड्स जो है वो ड्राई होते हैं, तो रेन बहुत ही अच्छा है. और ट्री टोड ने बोला, ट्री टोड एक ग्रीन कलर के छोटे टोड होते, उसने बोला कि रेन जो है वो हमेशा गिरते रहे, ये उसके लिए बहुत अच्छा है. कि और ये से और क्या करेगा, वो अपने आप को एक लीफ से, एक बड़ा सा लीफ से वाटर प्रूफ कर लेगा, यानी उसके ऊपर वाटर नहीं गिरेगा, रेन नहीं गिरेगा. देन ब्रूक क्या बोले, ब्रूक सैंग द ब्रूक यानी ब्रूक क्या बोले, ब्रूक छोटा स्ट्रीम होता है. सैंग यानी क्या सच में ब्रूक गाना गा रहे थे, नहीं, उसका जो साउंड होता है उसी को बताया गया कि सैंग. कि आई लव एट एवरी ड्रॉप उसको पसंद है रेन का, और वो सोचते कभी ये बंद ना हो, क्योंकि उसको क्या बनना है, ये रेन से उसको बहुत बड़ा एक रिवर बनना है और सी की तरफ जाना है. ओके. आप लोगों को पता है ना, रिवर जाके सी के साथ जॉइन हो जाता है, तो वही यहाँ पे बताया गया है. देन उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं टेड, जो कि एक स्मॉल चाइल्ड हो सकता है, वो बोले कि मुझे बहुत पसंद है रेन, क्योंकि वो जब अपने ये रेन में क्या होगा, वो अपने हाई टॉप बूट्स पहनेंगे और रेन कोट पहनेंगे और स्कूल जाते टाइम हर एक पडल के ऊपर से वो जाएंगे. ठीक है, जैसे आप लोग करते हैं ना रेन के टाइम, वैसे हैं. तो ये इसके लिए उसको भी रेन बहुत पसंद है. सो दिस इज़ द पोएम चिल्ड्रन. रीड द पोएम ट्वाइस and in our next class we'll solve the exercise of this chapter. Thank you.